Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we started a new series, keeping in view focus of SBI PO, how to convert your dream of becoming SBI PO into reality. In this series, I will be discussing various things, various steps you should undertake to do very efficient and effective preparation for SBI PO. Every year, hundreds of our channel subscribers they get success as SBI PO, and today hundreds of our channel subscribers are working as SBI PO. Many of them have now moved to scale 2 and scale 3 even, because right from 2012 onwards I am guiding the candidates how they should prepare for banking exam. So if you follow these small steps, if you imbibe these steps in your preparation, you can improve your performance and can convert your dream into reality. So one video I have posted yesterday, watch that also if you have missed it. I have made a playlist of all these videos. I am placing the link of that playlist also in the description box. So I will be adding number of videos on this uh, exam focused. Besides that, I am placing these days one timetable video 3 days. After every 3 days, we will be raising these frequencies to alternate day and even daily just before the examination. So follow that timetable video also. That will help you to prepare well for SBI PO examination. Now, step 1 I have already discussed what should be your step 1. Now, here is step 2. Now, step 2 means what are the subjects where we should focus more as compared to other subjects. If we analyze the performance of candidate in past years and if we draw some conclusion from that, we observe many candidates they miss the cutoff mainly on account of lack of score in English language. English is a weak subject for many candidates, and the reason is that they are putting some efforts for English language but not sufficient steps to improve their English language. So in this video I will explain how you can improve your performance in English language paper, because English is very important from SBI point of view, because there is an objective exam and there is a descriptive exam. So if overall your English language is strong, you score high in both the sections, objective as well as descriptive, and that provides you lead over your competitors. So what should be done to improve our English language knowledge? First thing is you must read some good grammar book on daily basis. Take out some PDF. The PDFs are available on Google search very easily. Wren and Martin, WREN and Martin is a very good book on English grammar. You can either take out some PDF by searching the Google, or you can buy this book or any other high school book that is recommended for grammar at school level. You can read that. Simple, read that book. Devote 1 hour a day, you will find lot of improvement in you. Second is develop a habit of watching English newspaper, and preferably you should read Economic Times, Business Standard, Financial Express or Mint. That will help you two way. One, on one side you will be able to improve your English language. On second way, you will be gaining knowledge on financial areas. The third thing is improve your vocabulary. Daily basis, pick some difficult word from newspaper, and more especially those words where the word meaning is not known to you. Search the word meaning from a dictionary and cram these vocabulary words.
If you can add 10, 20, 30 words daily, it can create a very good vocabulary for you. Usually, they may focus on those words of vocabulary that is frequently used or recently used by media. So, if you can pick some words from any newspaper which you have never seen that word, it seems to be a new word for you, pick that word and understand the meaning of that. Then you should develop habit of watching some English program on TV. That will help you to understand English well. You may be watching Hindi programs or regional language programs. Also develop habit of watching some English programs that will also add to you knowledge. Another important thing is attempting all the topic tests and sectional mock tests of Smart Kida to gain good knowledge on English. Link of this Smart Kida topic test and sectional mock test is available in description and comment column. Click the link, register, take these plans, apply coupon code AA03, you will have 10% off. This is very good series of topic test and sectional mock tests. You must use it. If you are not having right away, take it. It is going to be helpful and you are going to compliment me after covering all these topic tests. Then there is a very good course, Smart Read. Smart Read is a very good English course that is again provided by Smart Kida people. Take that course, apply coupon code AA03 to have 10% off. From the link that I have provided in description you can take, or from the app of Smart Kida after downloading it, you can select this course and apply coupon code AA03 to have 10% off. Many candidates have already joined this course and they are showing remarkable improvement. So if you devote extra time to English, this will be highly helpful to you to crack the SBI PO and follow the daily timetable schedules that I am providing. It will ensure a step by step journey to your success. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी SBI PO को फोकस में रखते हुए कि कैसे जो आपका सपना SBI PO बनने का है रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है. उसके लिए कल मैंने स्टेप 1 बताया आपको, आज हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं और इन सब वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है. वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. जिन्होंने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लें और जो जो बातें आपको बता रहे हैं वो अपने टाइम शेड्यूल में डाल के उसको आप करिए, उससे आपको मदद मिलेगी. ठीक है. तो अभी हमारे चैनल के बहुत हर साल सैकड़ों सब्सक्राइबर SBI PO सेलेक्ट होते हैं और पिछले कई वर्षों में 2012 से मैं गाइडेंस दे रहा हूँ. सैकड़ों की तादाद में SBI PO है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर. उनमें से कई हायर स्केल्स में भी मूव कर चुके हैं, स्केल 2 स्केल 3 में भी पहुँच चुके हैं. ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो भी वहाँ पे प्रमोशंस हैं वो लेते हुए आगे बढ़ चुके हैं. तो यदि आप SBI PO का ड्रीम कर रहे हैं तो आपको जो ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ अगर इस पर आप फोकस करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी, ऐसा मेरा मानना है. इंग्लिश मैंने देखा है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश की वजह से वो लोग खिसक जाते हैं सक्सेस से या कुछ नंबरों से छिटक जाते हैं कट ऑफ से. तो अगर आप इंग्लिश को फोकस में ले लें, इंग्लिश सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर दें तो आपको सक्सेस SBI PO में मिल सकती है. और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला है रोज़ इंग्लिश ग्रामर बुक ज़रूर पढ़ें. पढ़ें मीन्स नावल की तरह पढ़ें. कोई भी एक अच्छी इंग्लिश की ग्रामर बुक ले लें. इंग्लिश ग्रामर बाय रन एंड मार्टिन बहुत अच्छी किताब है, WREN and MARTIN. ये PDFs भी गूगल सर्च पे इजीली अवेलेबल हैं या आप ख़रीद भी सकते हैं या कोई बच्चा आसपास है उसके पास होगी. ये स्कूलों में हाईली रिकमेंडेड बुक है, आपको मिल जाएगी. अगर ये बुक नहीं मिल रही, कोई भी अच्छी ग्रामर की बुक आपको मिल जाती है उसको आप ले लीजिए और ग्रामर 1 घंटा रोज़ पढ़िए.
दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, अपनी आदत डालिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। कोई भी अच्छा फाइनेंशियल डेली, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, कोई भी आप ले लें, सबकी ऐप्स हैं, वहाँ से उसको पढ़िए। फाइनेंशियल डेली पढ़ने से आपको क्या एडवांटेज है, जहाँ एक तरफ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, दूसरी तरफ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ेगी, जो आपको जनरल अवेयरनेस के पेपर में और इंटरव्यू में मदद करेगी। इसके अलावा वोकेबलरी के ऊपर जोर दीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें जो शब्द आपको ऐसे लग रहे हैं पहले आपने नहीं सुने, नए शब्द हैं, उनको वहाँ से पिक कर लीजिए। 10, 20, 30 शब्द जितने भी आप चुनना चाहते हैं, उनकी डिक्शनरी से अर्थ निकाल लीजिए और अपनी एक लिस्ट बनानी शुरू कर लीजिए। अगर आप 20 वर्ड भी रोज़ ऐड कर पाते हैं, 30 वर्ड भी ऐड कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम होने तक आपके सैकड़ों की तादाद में ऐसे नए शब्द आ जाएंगे जिनकी नॉलेज आपको हो जाएगी। अधिकांश एग्ज़ाम्स के अंदर वोकेबलरी में वही शब्द वो पिक करते हैं जो रिसेंटली मीडिया में आते हैं और नए होते हैं, लोगों ने नहीं सुने होते हैं। कोई इसका सिलेबस नहीं है, कोई ये कहे कि मैंने ये कर लिया ये आ जाएगा, ऐसा कोई बता नहीं सकता है, पर अमूमन ऐसा देखने में आया है। इसके अलावा जो प्रोग्राम है इंग्लिश के देखने आप शुरू करें। आप हो सकता है हिंदी में देखते हो अधिकांश प्रोग्राम, रीजनल लैंग्वेज में देखते हो, तो कुछ प्रोग्राम जो इंग्लिश में हैं उनको भी देखना शुरू करेंगे, उससे भी आपके इंग्लिश में सुधार आएगा। इसके अलावा इंग्लिश के जितने भी टॉपिक टेस्ट हैं, जितने भी सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं स्मार्ट कीड़ा के, वो सारे अटैम्प्ट कर डालिए। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ये टॉपिक टेस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ये सेक्शनल मॉक्स हैं, इनको आप ले लीजिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, टॉपिक टेस्ट ले लीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लीजिए, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इन प्लान्स को आप ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए स्मार्ट कीड़ा ने बहुत अच्छा कोर्स स्मार्ट रीड स्टार्ट किया है। सैकड़ों लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है और निरंतर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर लें। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, इस कोर्स को ले लीजिए और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो थोड़े थोड़े स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी तैयारी में इसको शामिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा हर 3 दिन में अभी हम SBI PO का टाइम टेबल आपको दे रहे हैं, उसको फॉलो करिए। आने वाले दिनों में मैं इसको अल्टरनेट डे पे कर दूंगा और फिर एग्ज़ाम के नज़दीक इसको डेली बेसिस पर भी हम आपको गाइडेंस देंगे कैसे SBI PO की तैयारी करनी है। जुट जाइए, दिसंबर में इस एग्ज़ाम के होने की पूरी संभावना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।